doing great. This is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. Again, I'm here in front of you with the questions of DK Goel of class 12 accountancy students. Back exercise. We were doing back exercise question answers. We have seen up to question number 8 so far in the previous videos. In this video, we are going to discuss question number 9 and 10 of DK Goel. Again, I'm repeating. DK Goel latest edition 2025 examinations के लिए for class 12th accountancy students, partnership fundamentals. So, hope you have seen all the previous videos of DK Goel back exercise question answers. So let's start with our question number 9 today. And kindly, I request to you people, kindly subscribe to this channel. Thank you so much. So let's start the video. Let's have a look at the statement. तो पहले हम statement देख लेते हैं. So here we go with the statement of question number 9. So hope screen is visible to you people. So this is question number 9. एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं. So let's firstly read the statement. So what they are saying, just let me give me a second. Yeah. So what they are saying, Y and Z are partners with capitals of 2,50,000 and 1,50,000 respectively on 1st April 2023. Each partner is entitled to 9% per annum interest on capital. तो उनकी ओपनिंग कैपिटल उन्होंने बता दिया आपको कि Y की जो कैपिटल है that is 2,50,000 and Z की कैपिटल is 1,50,000. Okay, and उनको इंटरेस्ट देना है आपने IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. द रेट इज गिवन 9%. Okay, Z is entitled to a salary of 60,000 per month, sorry, per annum, together with a commission of 6% of net profit after charging his commission. तो Z को और क्या मिलना है? सैलरी मिलनी है, that is 60,000 ईयरली सैलरी गिवन है, और कमीशन देना है उसको हमने 6% ऑफ नेट प्रॉफिट, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 अमाउंट टू 2,12,000. राइट, तो उनका नेट प्रॉफिट उन्होंने बता दिया 2,12,000. हमें बनाना क्या है? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड. हमने दो मेथड डिस्कस किए थे in which we can prepare the capital account of the partners. One was fixed capital account method and the second was fluctuating capital account method. If you have missed that video, kindly see that video. We have discussed that how to make the capital accounts of the partners in that video, right? So when capitals are fixed or when capitals are fluctuating, divisible profit हम निकालेंगे, will match our answer with the of this question. And when capitals are fixed, वो उन्होंने आंसर दे दिए आपको, और when capitals are fluctuating वो उन्होंने आंसर दे दिए. ठीक है, और लास्ट पे एक हिंट दिया है, when profit sharing ratio of partner is not given in the question, the profits would be shared equally, as we know, right? So let's share the whiteboard. We'll start our question. So first of all, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम. स्टेटमेंट आपकी बुक में आपको मिल जाएगी, और आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टेटमेंट का.
So let's make a profit and loss appropriation account. So we'll make a format. So start making format with me of profit and loss appropriation account. It's very simple. डेबिट एंड क्रेडिट साइड बनाएंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे और अमाउंट का कॉलम बनाएंगे. So write here the name of the account. Okay. So profit and loss. Profit and loss appropriation. Just give me a second. Just a second, guys. Yes. तो ऊपर आप नाम लिख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, and this is the column of amount, and this is the column of particulars, and this is again the column of particulars, and this is column of amount. So as they have mentioned, the net profit will transfer that profit in profit and loss appropriation account. As we know that net profit from the profit and loss account is transferred to profit and loss appropriation account, right? So by profit and loss account, and in bracket you will write net profit transferred from profit and loss account, right? And that is 2,12,000. So I have written here 2,12,000. और उन्होंने क्या बोला है हमें कि आईओसी हमें देना है. आईओसी, तो आईओसी हम कैलकुलेट कर लेंगे. पहले कैपिटल्स गिवन है उनकी, वाई की और जेड की. दिस वी आर कैलकुलेटिंग आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? सो वाई की कैपिटल इज गिवन 2,50,000 and Z's capital is of 1,50,000, right? The rate is given 9% per annum. You will multiply with rate by 100. So calculating IOC. So if you calculate this, you will get 22,500 IOC of Y and 13,500 IOC of Z, right? So you'll note down this calculation side by side with me. So we'll write 2 IOC. आप पूरा लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई का कितना है और जेड का कितना है. तो वाई का हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 22,500 and Z ka we have calculated 13,500, right? And total you will write in the outer column, that is 36,000, right? Now they have mentioned in the question that you have to provide salary to Z, right? So we'll provide salary to Z, to salary, or you can write to Z salary. I'm writing in bracket Z. तो ये Z की सैलरी है, that is given 60,000 per annum. If अगर ये सैलरी आपको मंथली गिवन रहती तो फिर आप उसको ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करते, राइट? So it's already in the yearly salary, so I have written as it is. Now commission. तो कमीशन का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं. Just yeah, so we calculate commission amount that we have to provide to Z, right? So they are saying you have to calculate commission on the net profit. Rate is 6%, but मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो आप रेट बाय 100 नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, रेट बाय 100 प्लस रेट, तो यानी कि 6 बाय 106. So this is how you will calculate the commission if they have said in the question that you have to charge commission after charging such commission, after his commission. Then if you calculate this, you will get 12,000. So this, we have calculated commission also. You will write in the profit and loss appropriation account to commission of Z. So 12,000, right? Nothing else they have mentioned कि आपको और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या लिखना है, कुछ नहीं और हमारे पास है. So we'll close this account. So total you will write as we are able to see that this side is bigger, and you will write total 2,12,000 both sides, 2,12,000, and you will deduct 36,000, 60,000, and 12,000 from 2,12,000, right? Then what will you get is 1,04,000. So आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स एज द केस में बी, राइट? वाई का है क्योंकि profit sharing ratio is missing in the question. They have not given us the profit sharing ratio of the partners, so we'll assume the profit sharing ratio is equal. Then what we will do, we'll divide 1,04,000 divided with 2, right? So you are getting 50,000 each, 52,000 each, 52,000 and 52,000. So this is how you will prepare profit and loss appropriation account. After preparing the profit and loss appropriation account, now we'll start preparing the capital accounts, right? So first method will start when the capitals are fixed. When capitals are fixed means if the firm is following the fixed capital account method, then what would you do is you have to prepare two accounts. One is capital account and the other is current account, right? So first of all, हम capital account बना लेते हैं partner का. Afterwards, we'll make the current accounts also, right? So make a format of capital account. तो ये हम कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाएंगे क्योंकि दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, तो दो अमाउंट के कॉलम आप क्रेडिट पे बनाओगे एंड दो ही आप अमाउंट के कॉलम डेबिट में बनाओगे, राइट? So this, I'm making two columns of amount, one column of date and one column of date here as well. So let's write the headings here, date, and this is the column of particulars. This is column of amount of what? Y. So write amount or Y, you can write Y and Z, and this is column of date. This is column of again particulars of credit side, and here Y and Z. Okay, and the main heading you will write here capital accounts, right? तो आपको पता है कि जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशंस करते हैं, जो पार्टनर को देते हैं हम, वहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, वी राइट ऑन द डेबिट साइड, वी आर मेकिंग दिस अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म, जो कि अपने खर्चे जो है डेबिट पे रिकॉर्ड करती है और अपनी जो इनकम्स है वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड करती है. सो वी हैव रिटन, बट
इन द कैपिटल अकाउंट्स व्हाट वी डू इज कि जो जो फर्म ने अपना खर्चा दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको फर्म रिकॉर्ड करेगी क्रेडिट साइड पे इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि हम जो पार्टनर है उसको हम इनकम दे रहे हैं। इनकम जब भी देते हैं हम उसके क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और जब भी आप पार्टनर के सर के ऊपर कोई बर्डन, कोई खर्चा डालते हो, उसको वी नो वी राइट इन द डेबिट साइड, राइट। तो हमने क्या क्या दिया पार्टनर को? हमने दिया फर्स्ट ऑफ ऑल आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। You can check out the profit and loss appropriation account as well. And 22,500 इसको Y को दिया था हमने, and 13,500 हमने दिया किसको? Z को, राइट। और हमने क्या दिया? हमने सैलरी दी Z को, हाँ। Y का कॉलम आप ब्लैंक छोड़ोगे, एंड 60,000 यू विल राइट इन द Z कॉलम। और हमने क्या दिया? कमीशन दिया, बाय कमीशन। कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो भी Z को मिला है 12,000 का, राइट। और एक चीज और आप लिखने वाले हो, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे ये सब डाला था। हमने आईओसी भी दिया इनको, हमने सैलरी भी दी, हमने कमीशन भी दिया, और हमने इनको प्रॉफिट भी दिया। जो प्रॉफिट भी दिया आपने, वो भी आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखने वाले हो। किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 52,000 एंड 52,000, राइट। इसका ब्रैकेट में आप लिख दोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डेबिट साइड पे हमारे पास कुछ भी खर्चा इनके ऊपर डालने को नहीं है, दे हैव नॉट गिवन, सो विल राइट नथिंग हियर। तो अब आप क्लोज कर सकते हो। हाँ, डेट का आप थोड़ा ध्यान रखना कि डेट्स अगर स्पेसिफिकली गिवन है तो आप वही लिखोगे, बट अगर गिवन नहीं है तो जब भी हम ये इनको देते हैं तो आप 31st मार्च लिख सकते हो। 31st मार्च, राइट। एक ये जो हम बना रहे थे, दिस इज नॉट द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम बाद में बनाते हैं, अभी ये था आपका करंट अकाउंट, राइट। तो ये आप थोड़ा इसमें रेक्टिफिकेशन करोगे। दिस इज नॉट द कैपिटल अकाउंट, दिस इज द करंट अकाउंट वी आर मेकिंग फर्स्ट, राइट। तो हम ये करंट अकाउंट बना रहे हैं पहले, कैपिटल अकाउंट हम अभी इसके बाद बनाएंगे, राइट। मैंने गलती से ऊपर कैपिटल अकाउंट लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो करंट अकाउंट वी आर मेकिंग दिस, क्योंकि करंट अकाउंट में हम सारी की सारी चीजें लिखते हैं। अगर हम कैपिटल अकाउंट भी साथ में बना रहे हैं, करंट अकाउंट भी बना रहे हैं, तो सारी अप्रोप्रिएशन आप लिखते हो करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम चार चीजें ही रिकॉर्ड करते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं अभी भी बताऊंगी आपको, राइट। तो हम इसका टोटल करेंगे। अब टोटल करोगे तो 22,500 प्लस 52,000, तो ये आ जाएगा आपका 74,500। और जेड के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,37,500। तो यही क्या हो जाएगा? आपका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, राइट। तो क्योंकि कुछ भी डेबिट पे नहीं है तो एज इट इज इसको आप क्लोजिंग बैलेंस लिख दोगे, एंड टोटल आपने बहुत दोनों साइड्स पे लिखना है, राइट। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे ऊपर जो कैपिटल अकाउंट का हेडिंग मैंने दिया था वो आप कट करोगे उसको, और ये आप करंट अकाउंट ऊपर हेडिंग दोगे, क्योंकि ये करंट अकाउंट हमने बनाया है, राइट। अब हम इसके बाद बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू पीपल। तो चलो अब कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको फिक्स्ड अकाउंट बनाने को बोला है तो आप दो अकाउंट्स बनाओगे,
वन इज करंट अकाउंट एंड अदर इज कैपिटल अकाउंट। तो मैं डेट का कॉलम यहाँ पे नहीं बना रही, बट आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के चलोगे। तो दिस वी आर मेकिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। ऊपर अब आप डालोगे कैपिटल अकाउंट्स, राइट। just a second, guys. Yes. So this is our capital account. एक मिनट ये डिलीट कर लें थोड़ा लाइन को, राइट। तो आप इसमें क्या लिखने वाले हो? पर्टिकुलर्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स वाई एंड जेड, राइट। तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या क्या लिखते हो? ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, दैट इज द ओपनिंग कैपिटल, राइट। ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, राइट। अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाया तो आप बाय बैंक लिख दोगे, और अगर ड्रॉइंग की गई है अगेंस्ट कैपिटल तो टू बैंक लिख देंगे, राइट। बट अभी क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है हमारा कैपिटल का, ना ही तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, ना ही कैपिटल विड्रॉ की गई है। So we'll write the opening balance 2,50,000 and 1,50,000. तो और कुछ नहीं है तो टोटल सेम आएगा। Here also 2,50,000, 1,50,000। और अब आप क्या करने वाले हो? क्लोजिंग बैलेंस भी कैपिटल का सेम आएगा क्योंकि और कुछ नहीं है। तो 2,50,000 and 1,50,000। तो दिस इज आवर कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि आप अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करके चल रहे हो, देन कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इफ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, अगर आपको और कुछ नहीं गिवन तो आप सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही लोगे, जो कि सेम आएगा। बाकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में जाएंगी, राइट। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। तो इसके आंसर्स आप मैच कर लोगे। नेक्स्ट वी हैव द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, तो जिसमें हमें पता है कि हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, दैट इज नोन एज द कैपिटल अकाउंट, राइट। फ्लक्चुएटिंग में हमारी कैपिटल को लेट आवर कैपिटल फ्लक्चुएट, राइट, कि वो फ्लक्चुएट हो सकती है हर एक ट्रांजेक्शन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी मेक only one account that is known as the capital account, right? So this is these are the columns of amount. I'm not making here the column of date, but in exam अब डेट का कॉलम भी बनाने वाले हो, right? So this will write our headings, और आप ऊपर लिखोगे second method, that is a fluctuating method. तो ऊपर आप लिख दोगे capital accounts and fluctuating capital account method, right? So here you will write the particulars, here y, z particulars. So first of all, we'll write the opening balance of capital, right?
बाय बैलेंस, उसमें आपने देखा होगा फिक्स्ड में कि हमने जो ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही लिखा था, करंट अकाउंट में नहीं लिखा था। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब आप दोनों अकाउंट्स बनाते हो तो सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है वो चार रहती है: ओपनिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस, क्लोजिंग balance of capital if additional capital is introduced, and if drawing is made against capital, right? और बाकी सारी की सारी transaction we record in the current account. But here in capital account we record all the transactions, whether it's related to opening balance of capital or it's related to closing balance of capital or the other appropriations related to partners, right? So as we know, our opening balance is 2,50,000 of Y and 1,50,000 of Z. और हमने क्या दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था बाय आईओसी, बाय सैलरी दी थी हमने, और बाय कमीशन, कमीशन दिया था हमने, एंड जो उनका शेयर था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से निकला था वो दिया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यही सब था, इनकी अमाउंट्स विल राइट। आईओसी हमने दिया था वाई को 22,200, 22,500, सॉरी 22,500 एंड 13,500 हमने दिया था जेड को। सैलरी हमने दी थी जेड को सिर्फ, वाई को नहीं मिली थी 60,000, एंड कमीशन भी मिला था जेड को, दैट वाज 12,000, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से हमने कितना प्रॉफिट दिया था दोनों को? 52,000 ईच। तो अब इनको क्लोज करेंगे अकाउंट्स को, क्योंकि डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, तो इनका टोटल करके दोनों का यही क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, राइट? तो इनका अगर वाई का आप टोटल करते हो 2,50,000, 22,500 एंड 52,000, तो ये आ जाएगा आपका 3,24,500, राइट? एंड जेड का आ जाएगा आपके पास 2,87,500। यहाँ पे भी आप टोटल लिखोगे 3,24,500 एंड 2,87,500, तो यही क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। So this is how you will make the capital accounts under the fluctuating capital account method, right? So अब हम क्या करेंगे? अब we will move towards question number 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। Just let me share the screen again of question number 10. So हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मिलेगा, राइट? हाँ, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसकी एक बार स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। व्हाट दे आर सेइंग, so they are saying A, B and C were partners in a firm having capitals of 2 lakh, 2 lakh and 80,000 respectively. A की कैपिटल ओपनिंग दे दी उन्होंने 2 लाख, B की 2 लाख एंड C की 80,000, राइट? ऑन 1st April 2022, यानी कि 1st April means this is the opening capital. Their current account balance were 20,000 of A, 10,000 of B and 5,000 of C. इसका डेबिट बैलेंस है, राइट? तो ये उन्होंने करंट अकाउंट के भी बैलेंस दे दिए हैं हमें। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड to interest on capital at the rate of 10% per annum. B, being the working partner, was also entitled a salary of 6,000 per quarter. इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है कि ये पर एनम गिवन है या पर मंथ गिवन है या पर क्वार्टर गिवन है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अगर ये पर एनम गिवन है, यू विल राइट एज इट इज। इफ इट्स पर मंथ, तो आप उसको
मल्टीप्लाई करेंगे with 12 to make it a yearly salary. And if it's given in quarters per quarter, then you will multiply this with 4. As we know, we have 4 quarters in a year. So you will multiply this salary with the number of quarters, that is 4. तो आप उसको yearly salary में convert करेंगे, right? So take care of this. The profits were to be divided as, तो यहाँ पे थोड़ा twist है क्वेश्चन में. हम प्रॉफिट जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग बांट देते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बट वी हैव ट्विस्ट in this question. What they're saying, the first 60,000 you have to distribute in proportion to their capitals, okay, and next 1 lakh you have to distribute in the ratio of 4:3:1, okay, right, and remaining profits to be shared equally. तो 3 पार्ट्स में आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है in the profit and loss appropriation account, okay, don't worry. The firm made a profit of 2,80,000 on 31st March 2023 before charging any of the above items. ये इनको कंसिडर अभी हमने नहीं किया है, उससे पहले हमारा प्रॉफिट है 2,80,000. What we have to do? Prepare profit and loss appropriation account and pass the necessary journal entry. तो एक ही journal entry जो कि necessary है हमें regarding the distribution of profit and loss appropriation का profit, उसके regarding हमें journal entry pass करनी है, because what they have said for the apportionment of the profit के regarding you have to pass the journal entry, okay. So let's start this question. We are opening our whiteboard again, right? So this was question number 9. Now we are starting with the question number 10. Question number 10. So what we have to do now is, first of all, we have to make the profit and loss appropriation account. उसके बाद हमें distribute करना है profit को और journal entry pass करनी है. Here we are not supposed to make the capital accounts, right? So let's start with the profit and loss appropriation account. So here we are making the format of profit and loss appropriation account. As we know, this is the column of particulars and this is the column of amount. Again, this is the column of particulars, amount. Upside you'll write profit and loss appropriation account, and this is credit side and this is debit side, right? So they have given us a profit of net profit 2,80,000. So we'll write profit and loss account. In bracket you can write net profit transferred from profit and loss account, right? 2,80,000. That is given in the statement. You can match with that. So now we have to provide IOC. And rate they have given us, that is 10%. So, okay, let's start calculating the IOC first. So this is the IOC calculation, and capitals are A's capital is of 2 lakh and B's capital is also 2 lakh and C's capital is 80,000, right? So calculate 10% of each, 10%. So here it will come 20,000. Here also, because the capital is same 20,000, here it will come 8,000, right? Hope you understood this, how to calculate IOC. So now write this in the profit and loss appropriation account. So A's, B's and C's IOC 20,000, 20,000 and 8,000. Total is 48,000, right? So this we have written IOC. Next, they were saying we have to give salary to B. Salary. So it was given in the question 6,000 per quarter.
6,000 per quarter. You will multiply it with 4. It will become 24,000, right? So let's write this salary also in profit and loss appropriation account. 24,000, right? Nothing else is there. इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है. तो हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट जो है हमारा टोटल कितना निकल के आ रहा है, राइट? So if you deduct these two items from 2,80,000, 48,000 and 24,000 out of 2,80,000, you will get total profit remaining is 2,08,000. So here we'll write to profit transferred to partners capital accounts. तो ये है हमारा मेन काम कि हमें ये प्रॉफिट की अपॉर्चुनमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है. तो इसका हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, राइट? एक वर्किंग नोट बनाओगे आप. तो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है, लेट मी सी अगेन. ओके, द फर्स्ट 60,000 इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स. तो 60,000 ये है हमारा फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन. तो 60,000 जो प्रॉफिट है फर्स्ट वाला पार्ट, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन their proportion to their capitals. Okay, proportion to their capitals. Just let me see, just a second. Okay, so capitals we have 2 lakh and 80,000. तो इसको आप छोटा कर दोगे रेशो बनाने के लिए. तो ये 10 पे 10:10:4, then 5:5:2, राइट? हाँ, ठीक है. 5 और 5 10 और 2 12, तो टोटल हो जाता है आपका 12. तो 60,000 ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ए का, यहाँ बी का करेंगे, यहाँ सी का करेंगे. तो 60,000 इंटू 5/12 and 60,000 into 5/12 अगेन, ये रेशो ले रहे हैं हम कैपिटल की. एंड 60,000 into 2/12. तो ये देख लेते हैं हम कितना कितना आएगा. अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो आपका आ जाता है 25,000, क्योंकि ये सेम है. एंड थर्ड वाले का सी का आ जाएगा आपके पास 10,000. So this we have calculated the first part only, right? Now let's calculate the second part. What they are saying in the second part. So second part में हम क्या करने वाले हैं? Let me check again. Next 1 lakh in the ratio of 4:3:1. Okay. तो 1 लाख का जो प्रॉफिट है ये आपको बांटना है 4:3:1. 4 + 3 7 + 1 8. ओके, तो ए का, बी का एंड सी का. तो 1 lakh into 4/8 and 1 lakh into 3/8 and 1 lakh into 1/8. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, you will get 50,000 for A and 1 lakh into 3/8, that is 37,500 for B, and 1 lakh into 1/8, you will get 12,500 for C. And second part also successfully we have calculated. Now come to the third part. So if you want to copy this, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो again I'm showing first part. You can take the screenshot of first part. Now I'm moving to part 2. And now we are moving towards part number 3. Okay, and what they are saying, remaining profits to be shared equally. अब remaining कितना बचा है आपका?
रिमेनिंग हो जाएगा आपका 2,08,000 माइनस 60,000 हमने बांट दिया एंड माइनस 1 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वी आर लेफ्ट विद द अमाउंट दैट इज 48,000. So 48,000 is our remaining profit. Now इसको किस रेशो में बोला है उन्होंने? इक्वली, राइट? ओके, इक्वली करने के लिए क्या करोगे आप? डिवाइड बाय 3 कर दोगे। 48,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 हिस्सों में इक्वली बांट दोगे, यू विल गेट 16,000 फॉर A, B and C रिस्पेक्टिवली, राइट? 16,000। तो अब इनका हम टोटल करेंगे कि A का कितना बना टोटल प्रॉफिट, B का कितना बना और C का। नाउ लेट्स इनके सब पार्ट्स के जो प्रॉफिट इनको मिले वो हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में A को मिला 25,000, ओके 25,000, तो आप साथ साथ चेक कर सकते हो। 25,000 मिला फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में आप अपने आप चेक करो इफ यू आर राइटिंग 50,000 एंड थर्ड पार्ट में मिला 16,000। ऐसे ही बी को फर्स्ट पार्ट में मिला 25,000 एंड सेकेंड पार्ट में मिला 37,500, और थर्ड पार्ट में तो आपको पता है कि सेम मिल रहा है सबको 16,000। एंड सी को मिला फर्स्ट पार्ट में 10,000 एंड सेकेंड पार्ट में मिला 12,500, अगेन थर्ड पार्ट इज सेम 16,000। तो इनका आप टोटल कर लोगे कि कितना टोटल आ रहा है। ए का आपके पास दैट इज अबाउट 91,000 और बी का टोटल आ रहा है आपके पास 78,500 और सी का आपके पास आ रहा है 38,500। तो इनको हम लिखेंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो अभी हमने छोड़ दिया था ब्लैंक, उसको अभी आप फिल करोगे, राइट? तो ए को कितना मिला? 91,000 एंड बी को मिला 78,500 एंड सी को मिला 38,500। टोटल मिला के हो जाता है 2,08,000, और यहाँ टोटल भी लिख देना। तो एक बार फिर मैं इसका रिकैप दे रही हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सो दिस वाज आवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, this was our IOC calculation, and this is the first part of apportionment of profit, and this is the second part, this is the third part, and fourth part में हमने टोटल कर दिया जो जो उनको 3 हिस्सों में प्रॉफिट मिला, तो उसको अल्टीमेटली फाइनली वी हैव रिटन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी राइट जस्ट अ सेकेंड, एक जर्नल एंट्री बची है हमारी, तो वो भी हम कर देते हैं। तो यहाँ हम एक जर्नल एंट्री करेंगे रिगार्डिंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's current account, to B's current account, and to C's current account. Just a second, let me check कि ये हमारा, हाँ, क्योंकि उन्होंने करंट अकाउंट बोला हुआ है कि करंट अकाउंट के बैलेंस भी हमें गिवन है, तो आप करंट अकाउंट से ही ये जर्नल एंट्री करोगे। तो टोटल था हमारा 2,08,000, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 91,000 ए को मिला, 78,500 बी को मिला एंड सी को मिला 38,500। तो इस पे आप नरेशन दे दोगे being the profit distributed among A, B and C, right? Hope this is crystal clear to you people, and hope you understood. Again I'm asking कि आपको समझ आया या नहीं आया, you can write me in the comment section. तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 के साथ मिलते हैं in the next video.
So till then, take care and take care of your family also. Goodbye and thank you so much. Bye.